Hello, students. Welcome to our online classes. We had started lesson 6 from class 7 Town Traders and Craftsmen. This is part 2 from the same chapter. In the previous class, we already discussed about the urban centers, the pilgrimage towns, the administrative towns, commerce centers, commerce or trade towns. In this module, we will discuss about port towns, founded towns, and new towns. And also, we will discuss about the Masulipatam. So, let's start today's topic. Port towns. India's long coastline and extensive trade with outside world encouraged the rise of many port towns. Bombay, Sopara, Bharuch, Surat, Goa. These places are basically located near the coast areas, or basically we can say all these cities are coastal area lie in coastal areas, were located on western coast of Masulipatam. West Are located on western coast, and Masulipatam were important ports on the eastern coast, and these ports facilitated India's trade with Africa, West Asia, Europe, and Southeast Asia. Founded towns. In the 16th century, Sultan Muhammad Qutub Shah founded the city of Hyderabad as Golconda had become too congested. So at times new capital cities were founded if the existing one become overcrowded. तो क्या था कि जब पुरानी सिटीज़ जो थी वो ओवर क्राउडेड हो जाती थी, ओवर क्राउडेड मतलब उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा आ जाती थी, तो उसकी जगह हम क्या करते थे, न्यू सिटीज़ का डेवलपमेंट करते थे. जैसे मोहम्मद कुतुब शाह ने हैदराबाद नई सिटी को फाउंड किया. क्यों? बिकॉज गोलकोंडा जो थी वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई थी, वहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया था. It comprised and as an expression of Mughal authorities and sovereignty, the city Shahjahanabad was founded. So these are the examples of new cities or founded towns. It comprises the Jama Masjid, Red Forts, wide roads, bazaar, as well as administrative centers of Mughal dynasty. सो अब जो सिटीज़ डेवलप हो रही थी उसमें मस्जिद भी थी, फोर्ट भी था, वाइड रोड्स भी थी, बाज़ार भी था, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी थे. नाउ न्यू टाउन्स एंड सिटीज़. द कमिंग in of the European traders, especially British, in the form of East India Company, occupied territories for their needs. These trading places needed security as well as facility for go down to keep the goods, the living areas of their employees. अब क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसने अपना यहाँ पे ट्रेड एक्सपैंड किया. तो ट्रेड एक्सपैंड करने के लिए जो ट्रेड प्लेसेस थी उससे क्या करते थे, ये बढ़ाते थे. मतलब वहाँ पे गो डाउन चाहिए होता था जिससे वो गुड्स को सेफली रख सके. लिविंग एरियाज चाहिए होते थे एम्प्लॉयज़ के लिए. एंड द यूरोपियन ट्रेडर्स मेड देयर सेटलमेंट एट न्यू लोकेशन एंड अवे फ्रॉम एग्जिस्टिंग टाउन्स. और यूरोपियन ट्रेडर्स ने क्या किया, सेटलमेंट्स किया न्यू लोकेशन पे जो कि शहर से दूर था, मतलब एग्जिस्टिंग टाउन से दूर था. एंड दिस लेड टू द कमिंग ऑफ न्यू टाउन्स बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास. तो अब क्या था कि न्यू टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ, और ये न्यू टाउन्स कौन कौन से थे, प्रेजेंट डे के बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास. So this is how new towns and cities were developed. Masulipatam, which is also known as Machlipatam, is a city on the Coromandel coast of Andhra Pradesh in India. मसूलीपट्टनम कहाँ पे लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल कोस्ट पे. द सिटी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द गेटवे टू द टाउन डेकोरेटेड विद द आईज ऑफ फिश. और इसको मछलीपट्टम या मसूलीपट्टम क्यों कहते हैं, फर्दर एक्सरसाइजेज में आपका क्वेश्चन भी है, क्योंकि जो इसका टाउन का गेटवे है वो डेकोरेटेड है आई ऑफ फिश के थ्रू. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मछलीपट्टनम.
and it's also known as by the other name Masulipatam. It was founded in the 14th century by Arab traders who founded their way from Red Sea to southern India. The town became a center of international trade and commerce for the Dutch, English, and the French. So, Masulipatam is very important for trade, and as it is a center of international trade and commerce for Dutch, English peoples, and French peoples, and thus had established a factory at Masulipatam after receiving a farman from Qutub Shahi rurals. So East India Company had set up its first trading post here. However, Carnatic was they lost the port city temporarily to the French. So basically क्या है कि यहाँ पे डच पीपल्स ने भी अपनी कंपनी को सेटअप किया. ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यहाँ पे अपनी कंपनी को सेटअप किया, अपना फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप किया. सो मसूलीपट्टनम इज़ अ सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. Crafts and technology. The sources of medieval period tell us large variety of crafts and occupation existed in India. Stone cutters, masons, carpenters, weavers, tailors were a part of urban population. The production of fine cotton textiles made Bengal thriving center of commerce under Mughal patronage. The imperial karkhanas produce a variety of goods like furniture, jewelry, perfumes, and village also produce goods on a smaller scale. So that in terms of technology, British writers of the period say that Indian craft peoples were able to create copies of model ships which are better than original ships. सो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने लिखा था कि इंडियन क्राफ्टवर्स जो थे वो ऐसी कॉपी बना सकते थे, शिप मॉडल बना सकते थे जो ओरिजिनल शिप से भी बहुत सुंदर था. Internal and external trade. Accounts of foreign travelers shed the significant light on the self-sufficiency of village towns and cities. So, trade relations with Africa, Europe, Indonesia, China, Persia, and Burma existing during this period. And India's foreign trade links with the European and Asian markets. So, this is all about this chapter. Thank you, students. Stay home.